हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एटीसी क्लासेस। इस वीडियो में हम साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द बायोलॉजिकल द बायोलॉजिकल स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर इज नोन एज। इट इज़ एथोलॉजी। एंटोमोलॉजी क्या था? स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। एटियोलॉजी क्या था? स्टडी ऑफ कॉजेज ऑफ डिसीजेस। एथनोलॉजी क्या था? स्टडी ऑफ टू और मोर कल्चर्स। साइटोलॉजी क्या था? स्टडी ऑफ सेल्स। सेरोलॉजी क्या था? स्टडी ऑफ सेल एंड अदर फ्लूइड्स। एकोलॉजी का मतलब क्या था? स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट। मॉर्फोलॉजी स्टडी ऑफ शेप, स्ट्रक्चर एंड स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। स्टडी ऑफ एनिमल्स क्या था? जूलॉजी। Next question, the study of cells is called, it is cytology. Etology क्या था? Study of diseases. Serology study of body fluids like serum and other body fluids. Cytoplasm क्या था? It is the liquid, it is the fluid between the nucleus and the cell membrane. Next question, the term sericulture is related to which of the following? Sericulture is related to silkworm. Seri, silk. एवीकल्चर क्या था? बर्ड कीपिंग को एवीकल्चर कहते हैं। एविएशन। एवीकल्चर किसे कहते हैं? बर्ड कीपिंग। पीसी कल्चर किसे कहते हैं? फिश फार्मिंग। पीसी, फिश। एपीकल्चर किसे कहते हैं? बी कीपिंग। विटिकल्चर इज ग्रेप कल्टिवेशन। वेजिटेबल कल्टिवेशन को क्या कहते हैं? वोलरी कल्चर। फ्लावर कल्टिवेशन, फ्लोरिकल्चर। फ्लावर, फ्लोरी। The science that deals with the relation of various organisms with their environment is known as, it is an important bit. The science that deals with the relation of various organisms with the environment is known as, it is ecology. Cytology is a study about the cells, and zoology is study of the earth. Cytology is a study of the cells, and anthropology is study of humanity. The study of diseases in plants and the way in which plants resist or cope with the infection is called phytopathology. Pathology का मतलब क्या था? Study of diseases. Phytopathology क्या था? Study of diseases in plants. Photomorphogenesis क्या था? The process by which light regulates the plant growth. Pathology study of diseases. Physiology study of how living organisms and their parts function. Next question, the medical science which is related to the treatment and the study of liver is called, it is hepatology. Andrology क्या था? Study of infertility of sexual diseases in men. Hedophology क्या था? Study of influence of soil on living organisms, especially plants. हेल्कोलॉजी क्या था? स्टडी ऑफ पैथोलॉजी एंड ट्रीटमेंट ऑफ अल्सर्स। अल्सर्स के बारे में पढ़ने और उसका ट्रीटमेंट के बारे में जानने को क्या कहते हैं? हेल्कोलॉजी। हेडोफोलॉजी क्या था? स्टडी ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ सॉइल ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, स्पेशली प्लांट्स। एंड्रोलॉजी किसे कहता था? स्टडी ऑफ इनफर्टिलिटी एंड सेक्सुअल डिजीजेस इन मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी रिलेटेड टू द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज, classification of organisms is known as taxonomy. Anatomy क्या था? Study of structure of organisms and their parts. Limnology क्या था? Study of inland aquatic ecosystem. Inland ecosystem के बारे में पढ़ने को क्या कहता था? Limnology. Anatomy क्या था? Study of structure of organisms and their parts. Next question, the branch of science that deals with the life or the possibilities of life beyond the earth is known as exobiology. Exobiology. Mycology क्या था? Study of fungi is known as mycology. Mycology, study of fungi. Paleontology क्या था? Study of fossils of animals and plants. Entomology क्या था? Study of insects. Entomology, study of insects. Paleontology, study of fossils of animals and plants. Next question, the study of behavior of elements and human-like species such as monkeys, apes is known as, it is primatology. Apiology क्या था? Study of bees, especially honey bees. Mycology क्या था? Study of fungi.
एथनोबॉटनी क्या था? इट इज़ द study of relation between people and the plants is known as ethnobotany. Study of fungi क्या था? mycology. And study of bees is apology. Next question. An alloy is an example of solid solution. Colloidal solution क्या था? It is a mixture in which one substance is dispersed in soluble particles is suspended throughout another substance. इसमें और कैटेगरीज था, वो क्या था? सोल किसे कहते हैं? सॉलिड पार्टिकल्स इन लिक्विड. एमल्शन क्या था? लिक्विड इन लिक्विड. फोम क्या था? गैस पार्टिकल्स टैप्ड इन लिक्विड और सॉलिड. ये फोम और एरोसोल कुछ थोड़ा कंफ्यूजिंग था. गैस पार्टिकल्स आर टैप्ड इन लिक्विड और सॉलिड. एरोसोल क्या था? स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड और सॉलिड डिस्पर्स्ड इन गैस. सॉलिड सॉल्यूशन क्या था? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर crystalline solids alloys like brass क्या था? copper plus zinc. Mixture, what is a mixture? A physical combination of two or more substances that are not chemically bonded, it is known as mixture. Next question. The study of spiders is known as, it is arachnology. Apiology क्या था? Study of bees, especially honey bees. Cynology क्या था? Study of domestic dogs and their behavior. Anthropology क्या था? It is study of humanity, like its behavior and culture. Next question. How many states of matter have been determined so far? It is 5. They are solid, liquid, gas, plasma and Bose-Einstein condensation. Next question. Diffusion occurs with maximum intensity in. Diffusion with maximum intensity occurs in which state of matter? It is gases. Why? Because it has more kinetic energy than other states of matter. Next question. Which of the following is a heterogeneous mixture? Heterogeneous mixture क्या था? Sugar solution in water is a homogeneous mixture. Brass is copper plus zinc. It is also a homogeneous mixture. Air is a homogeneous mixture. Therefore, it is milk. Milk is a heterogeneous mixture. Homogeneous और heterogeneous का मतलब क्या था? Homogeneous mixture क्या था? Mixture where the components are uniformly distributed. They are known as homogeneous mixtures and the composition is same everywhere. Examples क्या था? Liquid में salt water, sugar water, alcohol with water etc. Gas में क्या था? Homogeneous mixtures का example air. Solids में alloys. Heterogeneous mixture क्या था? Mixture where the components are not uniformly distributed is known as heterogeneous mixture and throughout the composition is not same everywhere. Examples क्या था? Oil and water, soil, salad, concrete, etc. Next question. A mixture of sand and sugar is an example of heterogeneous mixture. Next question. At what temperature does gypsum get converted into plaster of Paris? Gypsum का molecular formula क्या था? CaSO4 2H2O. किस टेम्परेचर में plaster of Paris that is CaSO4 of H2O कन्वर्ट होता है? वो कितना टेम्परेचर था? 373 केल्विन. प्लास्टर ऑफ पेरिस में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स थे? 1/2. और जिप्सम में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स थे? 2. इट इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन 2 or more liquids do not dissolve in each other and do not form a solution is called immiscible. Solvent किसे कहते हैं? A substance that does the dissolving part and is present in larger amount is known as solvent. Solute किसे कहते हैं? A substance that dissolves in solvent and present in smaller amounts is known as solute. Immiscible किसे कहते हैं? 2 or more liquids that cannot mix to form a homogeneous solution is known as immiscible. Decantation किसे कहते हैं? The process of carefully pouring off the clear liquid from a mixture after the solid particles settled at the bottom. बॉटम में सॉलिड पार्टिकल सेटल होने के बाद ऊपर का लिक्विड होता है ना, उसे दूसरी कंटेनर में शिफ्ट करने को क्या कहते हैं? डिकैंटेशन. इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, डिकैंटेशन.
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन ए मॉलिक्यूल ऑफ अमोनियम क्लोराइड? अमोनियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या था? NH4Cl। इसमें नाइट्रोजन का कितने एटम्स थे? 1। हाइड्रोजन का कितने एटम्स थे? 4। क्लोरीन का कितने एटम्स थे? 1। टोटल कितने थे? 6। इट इज ऑप्शन सी। The percentage of hydrogen present in H2O molecule is H2O molecule. Here atomic mass of hydrogen क्या था? 1। टोटल कितने एटम्स थे? 2। therefore it is 1 into 2 that is 2। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या था? 16। टोटल कितना था? 2 + 16 18। इसमें हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना था? दैट इज 2 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 100। 2 1s 2, 2 9s 18, 9 1s are 9, 9 1s are 9, 9 1s are 9.11. It is approximately 11.11 percentage. Next question, dash is the smallest particle of matter that has free existence. Smallest particle of matter क्या था? Atom. But smallest particle of matter that has free existence is a molecule. Smallest particle of matter is atom, but it cannot remain in independent state. That is free state में atom नहीं रह सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मास ऑफ 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर? एक मॉलिक्यूल का कितने मास था? दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू हाइड्रोजन का मास क्या था? 1 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या था? 16 विच इज इक्वल्स टू 18। एक वाटर मॉलिक्यूल का टोटल मास क्या था? 18। 5 वाटर मॉलिक्यूल्स का मास क्या था? 5 इंटू 18 विच इज इक्वल्स टू 90 यूनिट्स। इट इज ऑप्शन डी। Next question, the number of atoms that constitute a molecule is known as atomicity. Next question, in CaO, the ratio of calcium and oxygen by mass is? कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम और ऑक्सीजन का रेशियो ऑफ मास क्या था? कैल्शियम का मास क्या था? 40 और ऑक्सीजन का मास क्या था? 16। 8 5s are 40, 8 5s are 40, 8 2s are 16, which is 5:2. It is option A. Next question, in which of the following process is the pyruvate is converted into ethanol and carbon? It is fermentation. Diffusion क्या था? Movement of particles from higher concentration to the lower concentration. Translocation क्या था? From one place to the another place. Transpiration क्या था? The process where plants absorb water through roots and release it as water vapor through leaves. Transpiration is also important. Next question, rusting of iron is a common example of chemical change. The process of conversion of gas directly into solid is known as deposition. Deposition क्या था? Gas directly converted to solid. Condensation क्या था? Vapor is converted to liquid is known as condensation. Sublimation किसे कहते हैं? Solid to gas. इसे evaporation किसे कहते हैं? Liquid to vapor. Next question, the balanced chemical equation corresponds to law of conservation of mass. Next question, who propounded the law of constant ratio or constant proportion? It is Joseph Proust. Who proposed each element has a particular atomic mass? कौन प्रपोज किया था each element को particular mass के बारे में? It is John Dalton. Next, which element has the maximum number of atoms in molecular form? It is sulfur. It has maximum of 8 elements in molecular form. Next, what is the mass ratio of nitrogen and hydrogen in ammonia? Ammonia का molecular form क्या था? NH3. नाइट्रोजन का मास क्या था? 14:2. हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या था? 1 into here 3 atoms are there, that is 1 into 3, which is 14:3. It is option C. Next question, atoms chemically combine to form molecules. How many water molecules are present in one molecule of copper sulfate? Copper sulfate का molecular formula क्या था? CaSO4 5H2O. इसमें कितने water molecules थे? 5. It is option A. Next question, the SI unit of resistance is equivalent to? Actually resistance का SI unit क्या था? Ohm, but in the options ohm is not given.
सो वी नो दैट रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू वोल्टेज बाय करंट. वोल्टेज का यूनिट्स क्या था? वोल्ट. करंट का यूनिट्स क्या था? एम्पियर. सो इट इज वोल्ट पर एम्पियर. ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, द SI यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी इट इज ओम मीटर. ओम किसका यूनिट था? रेसिस्टेंस. मोम किसका यूनिट था? कंडक्टेंस का यूनिट था. नेक्स्ट क्वेश्चन, द SI यूनिट ऑफ फोर्स इज. फोर्स का SI यूनिट क्या था? न्यूटन्स. बट हियर न्यूटन्स इज नॉट गिवन. वी नो दैट F इज इक्वल्स टू M इंटू ये मास इंटू एक्सेलरेशन. मास का यूनिट क्या था? kg. एक्सेलरेशन का यूनिट क्या था? मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर. देयरफॉर फोर्स का यूनिट क्या था? kg मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर और kg मीटर्स सेकंड स्क्वायर इनवर्स. दैट इज ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन. इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन डेसिबल्स. लक्स किसका यूनिट था? इल्यूमिनेशन का यूनिट था. टेस्ला किसका यूनिट था? मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी का यूनिट था. ओम किसका यूनिट था? रेजिस्टेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन, द SI यूनिट ऑफ वेट. SI यूनिट ऑफ वेट क्या था? इट इज न्यूटन. नेक्स्ट, यूनिट ऑफ मोमेंटम इज. मोमेंटम का यूनिट क्या था? वी नो दैट मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी. मास का यूनिट क्या था? kg. वेलोसिटी का यूनिट क्या था? मीटर्स पर सेकंड. देयरफॉर मोमेंटम का यूनिट क्या था? kg मीटर पर सेकंड और kg मीटर सेकंड इनवर्स. इट इज ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, गैलन इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ. गैलन किसके लिए यूज़ करते हैं? वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं. मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल्स टू. 1 atmospheric pressure is equals to 101,325 pascals, but it is given in 10 powers. So if you convert it, so we get 1.01 into 10 power 5 pascals. Therefore D option B. Next question, a light year is a unit that is used to measure. Light year किसके लिए यूज़ करते हैं? To measure the distance. नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल्स टू. 1 हॉर्स पावर इज इक्वल्स टू, ए डायरेक्ट क्वेश्चन था. 1 हॉर्स पावर इज इक्वल्स टू 746 वाट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू डिटेक्ट द हार्ट बीट इज. हार्ट बीट डिटेक्ट करने के लिए डॉक्टर्स किसे यूज़ करते हैं? स्टेथोस्कोप. इट इज ऑप्शन सी. स्पाइग्नोमैनोमीटर किसके लिए यूज़ करते हैं? बीपी चेक करने के लिए यूज़ करते हैं. थर्मोमीटर किसके लिए? टेम्परेचर. स्पाइरोमीटर किसके लिए यूज़ करते हैं? हेल्थ ऑफ लंग्स. टू फाइंड आउट द हेल्थ ऑफ लंग्स. लंग्स को चेक करने के लिए हम स्पाइरोमीटर यूज़ करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर. ब्लड प्रेशर फाइंड आउट करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं? इट इज़ स्पाइग्नोमैनोमीटर. स्टेथोस्कोप किसके लिए यूज़ करते हैं? हार्ट बीट के लिए यूज़ करते हैं. स्पाइरोमीटर किसके लिए? लंग्स के लिए यूज़ करते हैं. एकोकार्डियोग्राम भी हार्ट के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ हार्ट का ब्लूप्रिंट आता है. ब्लूप्रिंट का मतलब क्या था? हार्ट बीट. नेक्स्ट, ब्लड पंपिंग. ब्लड पंपिंग के बारे में भी हमें पता चलता है इसमें. और क्या क्या पता चलता है? हार्ट का वाल्व्स के बारे में भी पता चलता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए हमें किस इंस्ट्रूमेंट चाहिए? हाइग्रोमीटर. हाइड्रोमीटर किसके लिए चाहिए? टू फाइंड आउट द स्पेसिफिक डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी ऑफ फ्लूइड्स. ओडोमीटर किसके लिए? टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द व्हीकल. पायरोमीटर किसके लिए यूज़ करते हैं? टू फाइंड आउट द हाई टेम्परेचर्स. नेक्स्ट, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन ए सर्क्यूट इज मेजर्ड बाय. डायरेक्शन ऑफ करंट इज मेजर्ड बाय गैल्वेनोमीटर. एमीटर किसके लिए यूज़ करते हैं? करंट फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं. रियोस्टैट इज ए वेरिएबल रेजिस्टेंस. वोल्टमीटर किसके लिए यूज़ करते हैं? टू फाइंड आउट द वोल्टेज. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.